Question is that two identical disks at the same radius r are floating about the axis in opposite direction with the same constant angular speed is omega. The disks are in the same horizontal plane at the time t is equals to 0. Point P and Q are facing each other as shown in the figure. The relative speed between the 2 points P and Q is Vr is 1 time period t of rotation of the disk. Vr as function of the time is best represented by, okay, we have a graph that is Vr and t, time and velocity graph. Okay, we find out which is best representation of the velocity and time graph, and we having the ball, if having the radius of r, both radius are same, and the ball and this is moving to opposite direction of each other with having same angular speed omega. Okay, this point is considered as p and this is q. Okay, so at an instant speed of t, at instant speed of t, that is equals to v going in the clockwise direction, clockwise direction. Okay, at instant speed of t and speed of q, that is equals to v, and going into the anti-clockwise direction, okay, so relative angular velocity is of p, relative angular velocity of p with respect to t, that is q is equals to omega minus omega, that is equals to 2 omega with respect to p, and the relative angular separation of p, relative angular separation of p, that is q is equals to in time, t theta, that is equals to 2 omega t. Okay, 2 omega t. Relative speed between the 2 points P and Q at the time, relative speed of points P and Q at time t. Okay, that is represented by v resultant vector of magnitude, that is equals to under root v square plus v square minus 2vv cos 2 omega r. Okay, and that is equals to under root v square bracket 1 minus cos 2 omega r, and that is equals to under root 2v square into 2 sine square omega r, and this is 2v sine omega r. Since the resultant velocity will not have any negative values, so the lower part of the sine wave will come upper side. Okay, so this is the right answer of this, and thank you for the watching. Hello everyone. A thin uniform rod, pivot at O, is rotating in a horizontal
plane with constant angular speed omega as shown in the figure. At t equals to 0, a small insect starts from O and move with constant velocity v with respect to the rod toward the other end. It reaches the other end at t equals to capital T. Angular speed of the system remains omega throughout the motion. You have to find out the torque about O as a function of time. So we know that the tau is rate of change of angular momentum, and we know that the angular momentum is I times of omega in case of pure rotation, but here the omega is constant, only I will be changing. So I will write di by dt into omega. So if I talk about the I of the system, so the rod will have a moment of inertia about one end, right? And if you see the insect, let's say the insect mass is small m, rod mass is capital M. So I will write the moment of inertia of the system. Let's say at any instant the insect is at a distance of x. So I will write the rod moment of inertia this, insect moment of inertia this. Differentiate it, right? So I will write di by dt, this will become 0 since it is constant, and it will become 2max dx by dt. So dx by dt is nothing but the velocity with respect to the rod that is in radially outward direction. So this, right? So v is also constant, right? So you can see already here we got the di by dt is directly proportional to the distance from the axis. So 2mxv, right? Put it here, 2mxv omega. So only x is variable here. So it will be directly proportional to x, right? And when it will reaches to x, right, its di by dt will become 0 and torque will also become 0. And if you see, it reaches to end at t equals to capital T, right? So if you see in these two, the torque is directly proportional to x from 0 to t. But in this, there is torque after t equals to capital T, right? But the torque is 0 after t equals to capital T, right? Because after t equals to capital T, the insect reaches here and the moment of inertia stops changing. So if the moment of inertia doesn't change, then torque will be 0. So after this, the torque will be 0. So B option will be the correct one. Thank you. Hello students, our question is a block of base 10 cm into 10 cm and height 15 cm is kept on an inclined plane. The coefficient of friction between them is √3. The inclination theta of the inclined plane from horizontal plane is gradually increased from 0. So this is our question. Then we have to comment on some things. First we draw our inclined plane. So our inclined plane will be like this. Okay, let me complete it. Yeah, it will be like this, and also a square on it. So this will be our square. Okay, and there is one more thing. This angle, suppose we are taking it as theta, so the forces will be mg sine theta in this direction. Okay, and normal will be equal to our down component of force by mg, which is mg sine cos theta, and there will be friction in this direction. So we write, this is our F, this is our normal, and this is our mg cos theta. So our block to slide only when mg sine theta will be greater than or equal to force. We are taking the minimum thing, so it will be equality sign holds. So our friction will be mu into n, and n is
how much mg cos theta. So our tan theta will be mu. Okay, and mu is given to us as root 3. So if we put the value of root 3, so it is our tan theta. And root 3 can also be written as tan 60 degree is equal to tan theta. So our theta is 60 degree. So block will start sliding when theta is 60 degree. So if we compare, so our first option is at 30 degree, the block will start sliding down the plane. So it is incorrect. Okay. And for second option, we have to apply the conditions for topple. So we see we got a triangle inside the square like this. Okay. And this angle, suppose it is alpha. Let me write it again. It is alpha. And from the data given in the question, its height is 15. So this will be 15 by 2, which is 7.5. And its width is 10. So it will be half of 10, which is 5. So if we write 10 alpha, so it will be 5 by 7.5, which is nothing but 2 by 3. So our 10 alpha is 2 by 3. So we can clearly see that as tan is increasing function and tan alpha has 2 by 3 value and tan theta has root 3 value. So tan alpha is less than tan theta. This implies the block will topple before it starts sliding. So that means the block will topple before it start sliding. Okay, and this is the condition for block to topple. So the block will topple when, and all of this occurs. So this is our first condition and this is our second condition. Let me write it here also. The block will slide when, and all this occurs. So this is our first part and this is our second part, and it is completed here. So the correct option will be the block will remain at rest on the plane up to until certain theta and then it will topple. So it is correct and the others are false. Okay. इस क्वेश्चन में हमें दो डिस्क दी गई हैं जिसे हम एक एक्सियल के अलोंग रख रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों कोएक्सियल हैं। अब उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। अब डिस्क ए को क्या कहते हैं, हम एक एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है, और डिस्क बी को भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है कि डिस्क बी को हम डिस्क ए के साथ कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं और वो दोनों कुछ टाइम टी के बाद एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। तो इस टाइम टी के दौरान लगने वाले फ्रिक्शनल टॉर्क का हमें वैल्यू बताना है। तो इसके लिए पहले हम एक रफ सा डायग्राम कुछ बना लेते हैं। ये हमारा एक्सेल हुआ, ये हमारा एक डिस्क, सपोज ये डिस्क ए है और ये डिस्क बी है। अब ए जो है 2 ओमेगा से हम घुमा रहे हैं और बी ओमेगा से घुमा रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कराते हैं तो क्या होगा, अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, अब ये दोनों क्या है, एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा डैश से मूव करने लगते हैं। तो हमें ये ओमेगा डैश
पहले फाइंड करनी होगी और इसी से हम टॉर्क भी फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? तो आप जानते हो टॉर्क क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो पहले हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा और टाइम टी जो है वो हमें टी दिया हुआ है। तो ये टॉर्क जो है ये फ्रिक्शन का टॉर्क है, यानी फ्रिक्शन जो है इन दोनों पे एक्ट कर रहा होगा और ये फ्रिक्शन जो है हमारा वो इंटरनल फोर्स है। ठीक है, तो अगर इस पे इस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है तो इस पे ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये इंटरनल फोर्स है। ठीक है, इसके कारण कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा और सिस्टम का जो है वो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। पर एक इंडिविजुअली आप अगर इसका देखो तो चूंकि एक फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है तो इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्क्स हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा उस पर वही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, वही टॉर्क एक्ट कर रहा होगा, तो किसी एक का हम फ्रिक्शन टॉर्क निकालते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर की गई है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम निकालेंगे। तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियली क्या था, आई ऑफ डिस्क के इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क के वो था 2 ओमेगा प्लस आई ऑफ डिस्क भी इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क भी वो था ओमेगा। अब एल एफ क्या हो गया, आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी, ये हो गया कुछ ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा डैश। ठीक, आई ए क्या हो गया हमारा, आई, ये 2 ओमेगा, ये आई बी हो गया 2 आई ओमेगा इज इक्वल टू 3 आई ओमेगा डैश। यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ गई, 4 ओमेगा बाई 3। तो एक पर्टिकुलर डिस्क के लिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा एल एफ माइनस एल आई, और एल एफ क्या हो जाएगा, आई सपोज बी के लिए निकाल रहे हैं तो आई बी डब्ल्यू डैश माइनस आई बी डब्ल्यू, ये कितना था 2 आई इंटू 4 ओमेगा बाई 3 माइनस 2 आई इंटू ओमेगा। इससे वैल्यू क्या आ गई 8 ओमेगा आई बाई 3 माइनस 2 आई ओमेगा। इससे क्या आ गई 2 आई ओमेगा बाई 3, यानी डेल्टा एल हमारा कितना हो गया टाइम टी में 2 आई ओमेगा बाई 3। और टॉर्क निकालना है तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी दिया हुआ है तो आंसर हो गया हमारा 2 आई ओमेगा बाई 3 टी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।